हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे आईबीपीएस आरआरबी 2025 के जो रिक्रूटमेंट है स्केल 1, 2 एंड 3, ठीक है, उसके लिए कंप्यूटर नॉलेज का टॉपिक 20 सीपीयू शेड्यूलिंग, ठीक है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट है। सीपीयू शेड्यूलिंग, तो इसके बारे में अपन कुछ की पॉइंट्स एंड एमसीक्यूज कवर करेंगे, ठीक है। ये जो सीरीज है ये कंटिन्यू टिल एग्जाम तक जो है 28 दिसंबर तक स्टार्ट रहने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को एक लाइक कर दो, ठीक है। तो आज जो है हम सीपीयू शेड्यूलिंग में उसके कुछ की पॉइंट्स एंड एमसीक्यूज कवर करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले दिया है डेफिनेशन। तो देखो क्या बोला है। सीपीयू शेड्यूलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ प्रोसेस फ्रॉम द रेडी क्यू एंड अलोकेटिंग द सीपीयू टू इट। ओके, सीपीयू शेड्यूलिंग मतलब क्या, इट इज अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग प्रोसेस फ्रॉम रेडी क्यू एंड अलोकेटिंग सीपीयू टू इट। मतलब जो भी रेडी क्यू है, प्रोसेस है, फ्रॉम रेडी क्यू से सीपीयू को अलॉट करना, उसको बोलते हैं अपन सीपीयू शेड्यूलिंग, ठीक है। देखिए, द शेड्यूलर डिसाइड which process will execute next to maximize CPU utilization एंड सिस्टम परफॉर्मेंस। मतलब शेड्यूलर डिसाइड करता है कि नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो कौन सी एग्जीक्यूट होगी जिससे मैक्सिमाइज सीपीयू यूटिलाइजेशन एंड सिस्टम परफॉर्मेंस हो, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग। तो देखिए टाइप्स में प्रिमिटिव देखिए, प्रिमिटिव इसका डिस्क्रिप्शन क्या देखिए। सीपीयू कैन बी टेकन अवे फ्रॉम रनिंग प्रोसेस। ओके, दैट इज एग्जांपल दिया राउंड रॉबिन, प्रीमियम टू प्रायोरिटी एंड एसआरटीएफ। देन सेकंड है नॉन प्रिमिटिव, जैसे सीपीयू कैन नॉट बी टेकन until process voluntarily release it, that is first come first serve SJF, that is not preemptive. Okay, अब सीपीयू शेड्यूलर टाइप, ये अपन ने लास्ट टाइम भी देखा था। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, सिलेक्ट विच प्रोसेस टू एडमिट इनटू द रेडी क्यू, दैट इज कंट्रोल डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है। सेकेंड है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, मीन्स सिलेक्ट विच रेडी प्रोसेस रन नेक्स्ट, डिसाइड actual CPU utilization. Okay. Third, medium term scheduler, that is suspend or resume process used in swapping. Okay. अब डिस्पैचर देखते हैं। डिस्पैचर क्या होता है देखिए, अ मॉड्यूल दैट गिव्स कंट्रोल ऑफ सीपीयू टू द प्रोसेस सिलेक्टेड बाय द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। डिस्पैचर क्या है, इट इज अ मॉड्यूल टू गिव कंट्रोल टू द सीपीयू टू प्रोसेस सिलेक्टेड बाय शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। सेकेंड है परफॉर्मेंस कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, स्विचिंग टू यूजर मोड एंड जंपिंग टू द प्रोसेस कोड, ठीक है। एंड डिस्पैचर लेटेंसी है, देखिए टाइम टेकन बाय डिस्पैचर टू स्टॉप वन प्रोसेस एंड स्टार्ट अनदर, कॉल्ड एज अ डिस्पैचर। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ शेड्यूलिंग क्राइटेरिया। तो देखिए शेड्यूलिंग क्राइटेरिया देखते हैं, तो क्राइटेरिया दिया है एंड उसका मीनिंग दिया। तो सबसे पहला है सीपीयू यूटिलाइजेशन, keep CPU as busy as possible. Second, throughput, that is no number of process completed per time unit. Third है turnaround time, that is time for submission, that is completion. Next, waiting time, that is total time spent in ready queue. Next, response time, that is time until response or output. And fairness, that is equal CPU access to all process. मतलब 6 टाइप के शेड्यूलिंग क्राइटेरिया है, सीपीयू यूटिलाइजेशन, थ्रूपुट, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम एंड फेयरनेस। ओके, नेक्स्ट सिक्स्थ सीपीयू शेड्यूलिंग अल्गोरिदम, ये भी अपन ने लास्ट टाइम देखा था। सबसे पहले एफसीएफएस, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, दैट इज नॉन प्रीमिटिव, सिंपल बट कॉज कन्वे इफेक्ट। ओके, सेकंड एसजेएफ, शॉर्ट टर्म जॉब फर्स्ट, दैट इज नॉन प्रीमिटिव, ऑप्टिमल फॉर एवरेज वेटिंग टाइम, नीड प्रायर नॉलेज ऑफ burst time. Next, SRTF, that is shortest remaining time, that is premium to prompt if shorter process arrive. Okay. Next है priority scheduling, that is both, means high priority process get CPU first, may cause starvation. And last one is round robin, that is premium to type. Okay, each process get fixed time quantum, fair for short sharing. Okay. Next, multi-level queue scheduling, that is premium to and separate queue for different process, that is system or user. And multi-level feedback queue, that is premium to, that is
प्रोसेस मूव बिटवीन क्यू डायनामिकली। ओके, अब इंपॉर्टेंट टर्म दिया है, देखे स्टारवेशन दिया है, अ प्रोसेस वेट इनडेफिनिटली, दैट इज लो प्रायोरिटी प्रोसेस, नेवर शेड्यूल। ठीक है, सेकंड है एगिंग, दैट इज ग्रेडल इंक्रीज इन प्रायोरिटी टू प्रिवेंट स्टारवेशन। ओके, एंड थर्ड है कॉन्वे इफेक्ट, दैट इज शॉर्ट प्रोसेस टू गेट डिलेड बिहाइंड लॉन्ग वन, दैट इज FCFS। तो तीन इंपॉर्टेंट टर्म ध्यान रखना है, स्टारवेशन दैट इज प्रोसेस वेन indefinitely, egging that is gradual increase priority to prevent starvation, and third conway effect, that is short process get delay beyond long one। ओके, अब इसके कुछ एमसीक्यूज कवर कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट है द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ प्रोसेस फॉर एग्जीक्यूशन फ्रॉम रेडी क्यू इज कॉल्ड। तो देखिए ऑप्शन है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, सीपीयू शेड्यूलिंग, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, डेडलॉक अवॉइडेंस एंड डिस्पैचिंग। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, सीपीयू शेड्यूलिंग। सीपीयू शेड्यूलिंग डिसाइड विच रेडी प्रोसेस शुड रन नेक्स्ट। वैसे देखिए कंप्यूटर अवेयरनेस की शॉर्ट नोट प्लस एमसीक्यूज पीडीएफ अवेलेबल है, जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगी व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, इन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग सीपीयू अलोकेशन। तो देखिए ऑप्शन है फर्स्ट ऑकर ओनली व्हेन प्रोसेस टर्मिनेट, सेकंड ऑकर व्हेन प्रोसेस वेट फॉर इनपुट आउटपुट, थर्ड कैन बी टेकन अवे बाय शेड्यूलर एनी टाइम, फोर्थ हैपेंस ओनली इन बैच सिस्टम, एंड फिफ्थ हैपेंस विदाउट इंटरप्ट। तो करेक्ट आंसर है थर्ड, कैन बी टेकन अवे बाय शेड्यूलर एनी टाइम। प्रिमिटिव शेड्यूलिंग अलाउज सीपीयू टू बी फोर्सिबली टेकन फ्रॉम द रनिंग प्रोसेस। नेक्स्ट थर्ड, शॉर्टेस्ट जॉब फॉर शेड्यूलिंग इज ऑप्टिमल फॉर। तो देखिए ऑप्शन है मिनिमम टर्न अराउंड टाइम, मिनिमम रिस्पॉन्स टाइम, मिनिमम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, मैक्सिमम थ्रूपुट एंड मिनिमम वेटिंग टाइम। तो करेक्ट आंसर है लास्ट, मिनिमम वेटिंग टाइम, बिकॉज SJF मिनिमाइज एवरेज वेटिंग टाइम बट नीड नॉलेज फॉर बर्स्ट टाइम। ओके, नेक्स्ट फोर्थ, इन राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग परफॉर्मेंस डिपेंड्स हेवीली ऑन। तो देखिए ऑप्शन है फर्स्ट प्रायोरिटी नंबर, नंबर ऑफ प्रोसेस, साइज ऑफ टाइम क्वांटम, सीपीयू क्लॉक स्पीड एंड डिस्पैच लेटेंसी। तो करेक्ट आंसर है थर्ड, साइज ऑफ टाइम क्वांटम, बिकॉज इफ क्वांटम इज टू स्मॉल देन ओवरहेड, इफ टू लार्ज देन बिहेव लाइक FCFS। नेक्स्ट फिफ्थ, द कॉन्वे इफेक्ट इज एसोसिएट विथ विच एल्गोरिदम। तो देखिए ऑप्शन है SJF, FCFS, राउंड रॉबिन, प्रायोरिटी एंड मल्टी लेवल क्यू। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, FCFS। इन FCFS शॉर्ट प्रोसेस गेट स्टक बिहाइंड लॉन्ग वन, दैट इज पुअर CPU यूटिलाइजेशन। नेक्स्ट सिक्स, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में लीड टू विच प्रॉब्लम। तो देखिए ऑप्शन है कॉन्वे इफेक्ट, डेडलॉक, स्टारवेशन, एगिंग एंड फ्रेगमेंटेशन। तो करेक्ट आंसर है थर्ड, स्टारवेशन। लो प्रायोरिटी प्रोसेस में नेवर गेट CPU टाइम, दैट इज स्टारवेशन। नेक्स्ट सेवन, टू सॉल्व स्टारवेशन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज। तो देखिए ऑप्शन है एगिंग, प्रिजम्पशन, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग एंड वर्चुअलाइजेशन। तो करेक्ट आंसर है एगिंग। एगिंग ग्रेजुअली इंक्रीज प्रायोरिटी ऑफ वेटिंग प्रोसेस टू अवॉइड स्टारवेशन। वैसे देखिए फाइनेंशियल एंड बैंकिंग अवेयरनेस की पीडीएफ भी अवेलेबल है, जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगा व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, द डिस्पैचर परफॉर्म ऑल एक्सपेक्ट। तो देखिए ऑप्शन है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, स्विचिंग टू यूजर मोड, जंपिंग टू यूजर प्रोग्राम, प्रोसेस क्रिएशन एंड प्रोसेस रिजम्पशन। तो करेक्ट आंसर है फोर्थ, प्रोसेस क्रिएशन, बिकॉज प्रोसेस क्रिएशन इज डन बाय सिस्टम कॉल, दैट इज फॉर्क मेथड, नॉट द डिस्पैचर। नेक्स्ट नाइन्थ, विच शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इज मोस्ट सुटेबल फॉर इंटरैक्टिव सिस्टम। तो देखिए ऑप्शन है SJF, FCFS, राउंड रॉबिन, प्रायोरिटी एंड मल्टी लेवल क्यू। तो करेक्ट आंसर है थर्ड, राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन एंश्योर क्विक रिस्पॉन्स टाइम, आइडल फॉर इंटरैक्टिव टाइम शेयरिंग सिस्टम। नेक्स्ट 10, in SRTF scheduling, if two process have the same remaining time, CPU is assigned to। तो देखिए ऑप्शन है the one that arrived first, second the one with lower process ID, third the one with higher priority, fourth the one waiting input output, and fifth randomly selected process। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट,
The one that arrived first, because when burst time are equal then tie breaking use arrival order. वैसे देखें कंप्यूटर अवेयरनेस, एग्रीकल्चर, अकाउंटेंट ऑल इन वन, फाइनेंशियल बैंकिंग अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मार्केटिंग, सभी पीडीएफ जो है वो अवेलेबल है। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगा व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।